अच्छा, जैसे आजकल थोड़ा जैसे कि एआई के बारे में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि एआई इज़ गोइंग टू टेक योर जॉब्स। तो आपको क्या लगता है कि एआई जैसे कि अम, अभी आ रहा है, तो हाउ डू आई लाइक मैं खुद को कैसे कौन से स्किल्स मैं सीखूं जिससे कि मैं अपने आप को तैयार कर पाऊँ कि एआई जो है मेरी जॉब्स वो ना कर पाए। ठीक है, तो कौन कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए एक्चुअली? यार, I have been pondering about this question a lot, and I've been talking to my friends who are like in Silicon Valley level pe, right? Who are making AI apps and everything. And what they have told me that in the long term, in the very long term, only one thing will be sold. Right? Very long term, मतलब आज से 30 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, right? Experiences. Humans will buy experiences, nothing else, because everything else is automated. अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो. The second thing that they told me is, if you are looking for a 5-year plan, 3-year plan, or 10-year plan, then they said the thing that would be sold is trust. So, personal brand, email list, anything that you can do right now that creates trust in other people because of you is something that is of high leverage. Because if everything else is automated, what people are looking for? Trust. ये एआई टूल कि ये एआई टूल, उस टाइम ये क्वेश्चन नहीं हुआ कि एआई टूल यूज करूं कि नहीं. अभी क्वेश्चन क्या है? शुड आई यूज दिस और नॉट. बाद में क्वेश्चन क्या होगा? ये कि ये कोलगेट की पेप्सोडेंट. एंड देन द डॉक्टर हु कम्स बी लाइक पेप्सोडेंट, तो सब पेप्सोडेंट की ओर भागेंगे. कोई डॉक्टर बोले कोलगेट, सब कोलगेट की ओर भागेंगे. So it's like who will own the trust that time that matters. So yes, that's my answer on that.